Hello, friends. Wishing all of you a very good morning. So, after a small gap, I'm back with another content. So, it's of related to aptitude calendars. I thought of making a video on calendars and clocks together, but that would take a good amount of time. So, I have separated the topics. I will deal clocks in another video. So, this video is only about calendars. Okay. So, we'll discuss two questions at the end after discussing this concept. So what is calendar? How to deal with questions of calendars? So let's talk about basics. Like there are two types of years. One is a century year. One is a non-century year. Okay. Century year matlab just जो भी year can be divided by 100 without leaving any remainder. जैसे कि 2000, 1000, 500, anything which you can divide by 100 completely. Okay. And rest जो बचे हुए हैं they are non-century year, which quite clear. So how now there are concept of leap year and non-leap year. You all of you must be knowing what is a leap year, what is a non-leap year. Not talking about that. Okay. So, but there are two different ways to check. Okay, if year is a leap or non-leap. What we do commonly, we divide by 4 and say whether it is a leap year or not leap year. But this is not the case always. Okay, this is applicable only in the case of non-century years. Since we are dealing largely with non-century years in our daily life or commonly, so we divide by 4 and it turns out to be a okay, the kind of an answer. It's not wrong. But when we deal with century years, say 2000, 3000, 2005, anything with century year, then we will have to divide by 400. Okay, sorry, by 100. And we'll have to, sorry, yeah, sorry, divide by 400. And we'll have to check the remainder, if it is coming to be 0 or not. Okay. So here I have written it also for you, for your reference, that how to check for a non-century year, that is not a multiple of 100. Leap year should be exactly divisible by 4. Okay, non-leap year which is not exactly divisible by 4, we should leave it remainder between 0 to 3. And century year is as I just now discussed, multiple of 100. And to check a leap year, like it would be exactly divisible by 400. So for century years, we will be dividing by 400. And non-leap year is which is not exactly divisible by 400, which will leave any remainder between 0 to 399. Basic notations is this. You all know that. Two odd days for a leap year and one more. Because leap year has 366 days. So if you divide it by 7, it will give you 52 weeks. That is 364 days. 2 complete weeks and 2 extra odd days. And non-leap year is 365 days. So if you divide by 7, it will give you 52 2 complete weeks and 1 odd day. Okay. So odd day is what that the extra days that are left after completing full weeks. Okay. So they will be important while you do the sums, do the problems related to calendar. Ah, there you'll have to deal with odd days only. So this concept of odd days is very important. Okay. So here is a question for you. Uh, you can pause if you want to solve. I'm not pausing where this is a recorded lecture only. So you can pause and solve. So this is a question and straight over to the solution. If the third day of a month is Monday, which one the following will be the fifth day from the 21st of this month? So what is the month? You don't need what that. If it is January, February, what is it is not needed. For every month, it will be coming the same. Which month it is not going to be determined in this sum. Okay. So if you add, like it is asked that fifth day from 21st, so you'll have to add 5 days to 21. It will give you 26 days. It is already given third day of the month is Monday. So this will be a reference now. Okay, third day of the month, be a reference. So you'll have to differentiate. You'll have to minus 26 from 3. ठीक है उस पे आपको और डेज निकालना पड़ेंगे अभी आपको सिर्फ 26 को अगर आपने डिवाइड कर दिया 7 से तो वो नहीं होगा क्योंकि आपको थर्ड से रेफरेंस दिया हुआ है अब थर्ड से और थर्ड के रेस्पेक्ट में और डेज कैलकुलेट करो तो 26 - 3 हो गया 23 23 को आप 7 से डिवाइड करोगे फिर चेक आउट द नंबर ऑफ आवर डेज लेफ्ट तो देखा आपने कि 21 जाता है और 2 इज द रिमाइंडर तो 2 और डेज लेफ्ट है अब मंडे से 2 दिन ऐड कर दो ट्यूसडे एक दिन वेडनेसडे 2 दिन so Wednesday will be the answer. Okay, got it. This was a question asked in UPSC CSAT. Go ahead, Joshua. It's not a very difficult question. So this is another kind of question, like which calendar will have the same, which year will have the same calendar as 2009. Okay, this has also been asked in UPSC CSAT in 2009. तो ये भी करो पॉज करके I'm going to the solution. तो सेम कैलेंडर का मतलब क्या होता है कि when there is a no odd day, there are no odd days. Okay, मतलब
ये 2009 जो दिया हुआ है वो रेफरेंस ईयर है, उसके बीच में और जो साल आपका आंसर है उन दोनों के बीच में कोई और डेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? मान लो 2009, 2009 2010 में आपको देख, तो 2009 और 2010 में एक और डेज तो आ ही जाएगा। ठीक है, वो तो आना ही है। 7 से डिवाइड करके चेक कर, जैसे कॉन्जिक्यूटिवली आगे बढ़ते जाते हैं वैसे आपको और डेज ये करते हैं, सॉरी, फोर्थ से जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपका एक डेज ऐड होता रहता है। तभी तो 4 साल के बाद जाके लीप ईयर होता है। तो हर साल आपका एक एक करके और डेज शिफ्ट होता रहेगा। आप कैलेंडर पर भी चेक कर सकते हो। मान लो आज कौन सा साल है, आज है आपका 2025, ठीक है, अगला साल 2026, और 26 इज ऑल्सो नॉट अ, इट्स नॉट अ लीप ईयर, राइट? तो आप देखना आज की डेट, देखना आज कौन सा डेट है, 29th है, 29th ऑफ May। सो टुडे इज थर्सडे। आप मार्क कर लो कैलेंडर से, अगले साल सेम डेट देखना, ठीक है, 29th ऑफ May, इट विल कम आउट टू बी फ्राइडे। एक डेज हमेशा शिफ्ट होता है, लेकिन अगर ये लीप ईयर होता तो वो 2 दिन शिफ्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्राइडे इट वुड हैव बीन सैटरडे दैट केस, ठीक। तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑप्शंस से देख देख के चेक कर लेंगे। ऑप्शंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है पूरा, आपको ऐसे कुछ कुछ मतलब ऑप्शंस का आपको यूज करने का मुझे ये क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं 2018 और 2009। तो 2009 2018 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9 9 साल थे, ठीक है, तो 9। और आपको लीप ईयर भी देखना पड़ेगा क्योंकि लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं, ठीक है। तो प्लस लीप ईयर आपको ऐड करना होगा, तो इन दोनों में कितने लीप ईयर हो गए? 2012 हो गए, 2013 16 हो गए, 2 लीप ईयर्स। तो 9 + 2 11, 7 से डिवाइड करो, 4 और डेज आ गए, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। 2017, 2017 2009 में कितने साल थे? 8 साल। कितने लीप ईयर थे? 2012 2016, ठीक है। 8 और 2 10, ये भी नहीं होगा। 25 16 के लिए चेक करो, 15 की, तो 15 विल बी आंसर, ठीक है। 2009 2015 में 6 साल है, ठीक है। और लीप ईयर कितने? एक 2012, तो 6 + 1 7, और डेज। सो दिस ईयर विल हैव द एग्जैक्टली द सेम कैलेंडर एज 2000। आप ऑप्शन में एलिमिनेट भी कर सकते हो 2016 को, क्योंकि ये जो कभी ये याद रखना, कभी भी कोई नॉन लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर से बराबर नहीं होगा, ठीक है। नॉन लीप ईयर का कैलेंडर दिया हो तो उसका आंसर हमेशा नॉन लीप ईयर ही होगा, और अगर लीप ईयर दिया हुआ है तो उसका आंसर हमेशा लीप ईयर है, ठीक है। ये याद रखना मुझे। तो आई होप थोड़ा सा मैंने आपको कुछ सिखाया, थोड़ा कुछ वैल्यूएशन हुआ होगा। अभी आप जाकर प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ भी डेट लिख लो उसका, चेक करते रहो क्या डेट हुआ होगा बैक डेट में जाके, क्या सब कुछ और डेज पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो आज चीज यहीं पे खत्म करते हैं। We'll meet shortly again. Okay. Till then, bye guys. Enjoy, have fun, relax, and study. Bye.